let us start. Let us start the today's session. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Is the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. So today we are going to see the asynchronous counter. Okay, so in the last class we have seen some basics about the asynchronous counter. So what is how you will characterize or how you will find that the counter is given as an asynchronous counter? सर तो आउटपुट होगा उसका वो दूसरे वाले काउंटर का इनपुट होगा, फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होगा, और सिंक्रोनस काउंटर में एक क्लॉक का सब में सिग्नल जाएगा. Okay, means like in case of asynchronous asynchronous counter, the output of one flip flop is given to the clock of the next flip flop, isn't it? So in the last class, we have also seen that if we have, I think, okay, let us see flip flop with 4 flip flops, okay. So here in this case, you can observe that here we will have 3 flip flops as A, B, and C. Okay, all of these flip flops are JK flip flops. Okay, so all of these are JK flip flops. So and we have already seen that there is a clock pulse, and all of these, if all of these flip flops are negative edge trigger flip flop, so there will be some output QC, QC bar, QB, QB bar, and QA, QA bar. Okay, and what I have already told you, that all of these JK flip flop or these also these flip flops may be master slave JK flip flop. In that case, the inputs are given to all these flip flops are 1. Okay, so what I am telling, that the outputs are the inputs. Firstly, I am telling about the inputs, and the inputs of all the flip flops are given as 1. Okay. So here the input is given as 1 for all the flip flops, and we have some output. Okay, so let us take the output here. Okay, here we have QC, here we have QB, and here we have QA. Okay, so the 3 outputs are here, and what we have already seen that the clock of the next flip flop, that is the first flip flop, is flip flop C, and the output of this first flip flop is acting as a clock of the next flip flop here, as you can see here. Okay, and
the outputs are shown as this. So this is the the basic, you can say that the basic block diagram of an asynchronous counter with 3 flip-flops. Okay, so now what will be the mode of this counter? So what we have seen earlier also, the mode of this counter or the modulus of this counter. Okay, mode or modulus of this counter will be given by what? It is given by 2 to the power n, where what this n represents, what this n represents, this n is the number of flip-flop. Okay, so here you can tell it as a mode number or modulus number. So what will be the mode number? Mode number will be equal to 2 to the power n, where n is the number of flip-flops. Okay, so if we have 3 flip-flops as we have taken here, for example, n is equal to 3. So here we will have the mode number will be equal to 2 to the power 3, that is 2 to the power 3. 8. Okay, so 8. So in this case, whatever we have drawn here, the 3 flip-flop, the counter having 3 flip-flops. So the maximum counting will be what? So the total number of states, mode number represents what? Mode number represents the total number of states. Okay, here mode number, what this represents? This mode number represents what? The total number of states. So if we are telling here that we have a mode n, that is mode 8 counter. So here we have a mode 8 counter. So what this means, mode 8 counter means what? It will have 8 states. So what should be the states? So here we have 8 states, and the maximum state or the maximum number, maximum state or the maximum counting will be what? 2 to the power n minus 1. Okay, so here we have n is equal to 3. So for this case, we have 2 to the power 3 minus 1, that is 7. Okay, so if we have a mode 8 counter, then we have 8 states and the maximum counting will be up to 7. So the counting will be what? It will be from start from 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, and again it will come to 0. Okay, so here we will have a total of 8 states. As you can see here, we have 8 states. 1, 2. Okay, so this is the first state. You can tell it as a first state. This is the second state. This is the third state. This is the fourth state. This is the fifth state. This is the sixth state. This is the seventh state, and this is the 8th state. Okay, so here we will have total of 8 states, but as we are starting from 0, so the counting will be go up to 7. Okay, so here we have seen the very basic block diagram or the block representation of the 3 flip-flop counter, which is mode 8 counter. Okay, now we are interested to, okay, one more thing we all should know here, that on what situation, in what situation this counter will work as up counter or down counter. So this counter may be an up counter or maybe a down counter. As we can see here, this flip-flop will have a total of these 8 states,
and among these 8 states, the counting may be from 0 to 7 or from 7 to 0. So on which criteria it will be dependent on? Can anybody tell me? किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये अप काउंटर होगा या डाउन काउंटर होगा? जीरो टू 9 जाएगा तो अप, 9 to 0 जाएगा तो डाउन। यस, ये तो होगा ही, बट एनीथिंग एल्स? यहाँ पर क्या कनेक्शन और यहाँ पर कर सकते हैं कि वो अप काउंटर या डाउन काउंटर की तरह वर्क करे? ओके, सो लेट अस सी। क्लॉक। ओके, सो कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ अपना डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, सो प्लीज राइट योर नेम, राइट योर डिपार्टमेंट विथ योर नेम। ओके, okay, so here we can have two possible inputs. These may have, okay, so here I am writing it with green color. Here I am giving one input. Okay, so what is this? And there may happen that there will be some other input also. So what is this? Okay, so we will have some more input as clear, and the another input is preset. Okay, so there may be one of these inputs should be active, and as you can see here that I have written here CLR, the bar of CLR, that is complement of CLR and complement of preset. What does this mean? So this CLR and preset. Okay, so both of these connections are used to clear and preset the output of this counter. Okay, so जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जब भी हम इस सर्किट को पावर सप्लाई करते हैं, इन दैट केस आउटपुट में क्या होगा, इट कैन नॉट बी प्री डिटरमिन्ड. ओके, व्हाट आई हैव टोल्ड दैट व्हेनेवर give power to this particular circuitry, the output there will be 0 or 1, it cannot be determined. So to assure that the inputs clear and preset are used, so what this clear will do, this clear will do what, it will clear the output. इसका मतलब क्या है, ये output को clear करेगा, मतलब output will be 0 in this case for all the flip flops. मतलब अगर हम इस क्लियर इनपुट को अगर हम एक्टिव करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0 0 0. कब, जब इस सर्किट को स्विच ऑन किया जाएगा. ऑन द अदर हैंड, व्हाट दिस प्रीसेट विल डू, when this preset is active, the output will be set. ओके, तो यहां पर नाम से पता चल रहा है, जब क्लियर इनपुट एक्टिव होगा तो आउटपुट 0 सेट हो जाएगा, और जब प्रीसेट एक्टिव होगा तो आउटपुट 1 सेट हो जाएगा. ओके, सो बोथ ऑफ दीज सिग्नल्स और द इनपुट्स आर एक्टिव लो. ओके, बोथ ऑफ दीज सिग्नल्स आर एक्टिव लो. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही जो सिग्नल्स हैं वो एक्टिव लो हैं. एक्टिव लो कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी ये लो होंगे तब ये एक्टिव होंगे. ओके, सो जब ये 0 होगा तब ये एक्टिव होगा, मतलब ये प्रीसेट, मतलब आउटपुट में सेट हो जाएगा. और अगर क्लियर एक्टिव होगा तो इसे 0 होना पड़ेगा. इन दैट केस हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, लेट अस ड्रॉ an up counter. Okay, a signal for up counter.
So let us draw it. I am taking it as an up counter. ओके, सो अप काउंटर के लिए हम क्या दे रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास क्लॉक होना चाहिए. सो लेट अस ड्रॉ द सिग्नल फॉर अ क्लॉक. ओके, सो हियर इट इज क्लॉक इनपुट. और हम क्या दे रहे हैं? With this clock input, we have to see the outputs in the first, second, and third flip-flop. Okay, so we have to see the outputs of flip-flop. So I am writing here QA, QB, and QC. So what is QA, QB, and QC? I think all of you know that. Okay, so as the very first flip-flop in the circuit is. Okay, let me take this figure there so that it will be more clearer to you. So is there any? Okay. Just wait for a minute. Oh. Okay. Is the picture clear to you all? Yes, sir. Okay, because I have reduced the size. Okay, so यहाँ पर अभी actually हम input apply कर रहे हैं. That input is applied to a flip flop C. Okay, so the first output will change in the flip flop C. Okay, so instead of writing this QC here, we can write this QC above. Okay, at the first position I have written QA, then QB, then QC. So instead of writing QA above, we can write QC above. Okay, there is no any issue. So what I have to do now? I have to indicate all the I have to indicate the negative edges of the clock. So these are the negative edges of the clock. Why I am indicating these negative edges? Can anybody tell me? Negative triggered. Yes, the flip-flops are negative edge triggered flip-flop. So that there will be change in the output only at the negative edges of the flip-flop. Okay. So I am drawing the signal for the output QC. Okay, firstly. So here I should have the signal. So let me draw that. Okay, now what we can see here, as we have to see the output in C. So let me write it as QC, QB, then QA. Okay. First, I am drawing the signal for QC. So here, what we can see here, as we are trying to draw for up counter. So अगर up counter के लिए draw करना है, तो initial
स्टेट क्या होना चाहिए, जीरो स्टेट होना चाहिए। मतलब क्यू सी, सॉरी यहाँ पर क्या है, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, ये तीन आउटपुट्स हमारे पास हैं। इन तीनों आउटपुट्स में जब इन तीनों का आउटपुट 0 0 0 आएगा, so this is the binary. Okay, so what is the decimal of this 0 0 0? Zero. Yes, if this 0 0 this is in binary 0 0 0, so that is decimal will be 0. Now if it is 0 0 1 in binary, so what will be the decimal value? 1. It should be 1. 1. So in the same way, we can get the output of QA as 1, output of QB as 0, and output of QC as 1. So if this is binary, then what is the decimal of this binary? 5. Yes, it should be a 5. Okay. So in the same way, based upon the outputs QA, QB, and QC, we can get the numbers or we can get the states. Okay. That is why we are trying to draw this timing diagram. Okay. So what I have told you that we are going to design an up counter. So for up counter, the initial state should be 0 0 0. So for that, which pins should be active? Clear should be active or preset should be active? If we want to, clear. yes, clear should be active. Very good. So clear जो इनपुट है वो एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक अप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट हमें 0 0 0 चाहिए, इसलिए क्लियर जो इनपुट है वो एक्टिव होना चाहिए। तो हमारे पास QC और QB QA सभी का वैल्यू 0 0 0 है। सो इट विल कंटिन्यू टू 0, इट विल कंटिन्यू टू 0, यहां तक ये 0 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि J और K जो इनपुट है, यहाँ पर J और K जो इनपुट है, दिस JK inputs are 1 1, and we already know for the case of JK flip flop, the output will be 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, so for this set of inputs, we will have the output as, for this case it is Qn, for this case it is 0, for this case it is 1, and for the last case it is Qn bar. Okay. Here the present state is, you can see that the output of first flip flop, that is flip flop C, यहाँ पर output 0 है। तो क्लॉक का जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव एज आएगा, आउटपुट चेंज होके 1 हो जाएगा। ओके, और ये आउटपुट कब तक 1 रहेगा? जब तक कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जब तक कि फ्लिप फ्लॉप को नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं मिलता है क्लॉक का। ओके, सो इन दिस वे द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप सी विल चेंज एट एवरी नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स। 0 है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे फिर 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ नेगेटिव एज आया तो यहाँ फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ फिर से नेगेटिव एज आया मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नेक्स्ट एज नहीं आएगा नेगेटिव। सो हियर इट विल चेंज इट्स स्टेट, अगेन हियर इट विल चेंज इट्स स्टेट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस बी? व्हाट अबाउट दिस बी? ओके, तो अब ये जो फ्लिप फ्लॉप बी है, ये जो फ्लिप फ्लॉप बी यहाँ पर है, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी, फ्लिप फ्लॉप बी जो है, इस फ्लिप फ्लॉप बी में इनपुट जे और के जो है वो 1 1 ही है, और जो क्लॉक मिल रहा है वो फ्लिप फ्लॉप सी का आउटपुट है। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप सी जब इसका आउटपुट नेगेटिव जाएगा, इन दैट केस फ्लिप फ्लॉप बी का आउटपुट में चेंज आएगा। So here are the negative edges of
output of flip-flop C. These are the negative edges. Okay. So firstly, initially क्या है? Initially V का जो value है वो 0 है. Okay. तो ये 0 कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कि नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आता है. सो ये जो नेगेटिव एज है QC आउटपुट है किसका? QC का. बट दिस इज एक्टिंग एज अ क्लॉक इनपुट फॉर फ्लिप फ्लॉप B. सो हियर at this position there will be a change. Now अब ये चेंज कंटिन्यू करेगा कब तक? जब तक कि क्लॉक का नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं मिलता है. तो यहाँ पर फिर से ये चेंज होगा. ओके. इन द सेम वे इट विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट नेगेटिव एज. अगेन दिस विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट नेगेटिव एज, and again it will continue till the next negative edge. Okay. Now we are interested to get the output of flip-flop A. So now flip-flop A के इनपुट में क्या है? flip-flop A यहाँ है. flip-flop A के इनपुट में JK इनपुट है और एक क्लॉक इनपुट है, और ये जो क्लॉक इनपुट है वो QB से कनेक्टेड है. सो आप देखेंगे कि QB का नेगेटिव एज कहाँ है. सो QB का नेगेटिव एज यहाँ है और यहाँ है. ओके. सो QB का नेगेटिव एज हम देख रहे हैं. तो पहले से जो QA का जो इनपुट है दैट इज QA जो आउटपुट है, दिस इज 0. ओके. सो इट विल कंटिन्यू टू बी 0. It will continue to be 0 up to the first negative edge of the clock. Okay. So this is the first negative edge. यहाँ पर जैसे ही negative edge आया, ये चेंज हुआ. अब फिर से नेगेटिव एज तक वही कॉमन रहेगा. नेक्स्ट इट विल चेंज एट द नेक्स्ट नेगेटिव एज. ओके. आई थिंक इज इट क्लियर टू यू ऑल दैट हाउ द आउटपुट्स आर चेंजिंग? किन्हीं का कोई डाउट है यहाँ पर? यस सर. यस, व्हाट इज द डाउट? सर समझ नहीं आया ये QC QA QB वाला. पहले ये बताए कि QC QB और QA है क्या? ओके सर. टेल मी दैट व्हाट इज QC QB एंड QA? सर ये नेगेटिव, ये लाइनिंग्स वाला समझ नहीं आया. नहीं, आप मुझे बताइए कि QC QB और QA है क्या, ये बताइए. व्हाट आर QC QB एंड QA? Sir, I don't know because this is my first class. Okay, so if this is your first class, then I have told you at the initial stage today. Are you able to see the picture? Yes, sir. So in this picture, what you can see that what are QB, QC and QA? Sir, current? Not these are not currents. So here, are you familiar with flip-flops, JK flip-flop? Yes, sir. Okay, so in JK flip-flop, what are the inputs? Sir, JK flip-flop inputs are QA, QB, or QC. Okay, so I think you need to go through the flip-flop, JK flip-flop. What is JK flip-flop? What is what are the flip-flops? I think you should know. Okay, sir. And, इन flip-flops मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था. आई थिंक लास्ट डे आप नहीं थे क्लास में. No, sir. ओके, सो यहाँ पर अभी ये जो मैंने 3 flip-flops ड्रॉ किए हैं, इन 3 flip-flops में से जो फर्स्ट flip-flop है flip-flop C. दिस flip-flop C यहाँ पर ये जो दिख रहा है flip-flop C. दिस flip-flop C will have 2 inputs J and K and 2 outputs as QC and QC bar. Yes, sir.
ओके, तो यहाँ पर ये QC बार ये एक आउटपुट है और QC एक आउटपुट है। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप में मैंने दिखाया है, फ्लिप फ्लॉप बी के आउटपुट को QB और QB बार से दिखाया है, और फ्लिप फ्लॉप ए के आउटपुट को QA और QA बार से दिखाया है। ओके, यस सर। ये जो टाइमिंग डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए पहले आपको फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन समझना होगा। ओके सर। बिना फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को समझे आप यहाँ नहीं समझ पाओगे। एंड अगर आपको काउंटर डिजाइन करना है, रजिस्टर डिजाइन करना है, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट। ओके ओके सर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये एक्चुअली QC, QB और QA जो हमने यहाँ पर दिखाया है, these are the outputs of flip flop C, flip flop B and flip flop A. ओके, अब ये जो फ्लिप Yes. फ्लॉप आउटपुट में जो चेंज होता है, हर एक टाइम पीरियड पर हमने QC, QB और QA के आउटपुट को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ वी वांट टू Yes sir. find that what are the, so this is the time period T1, this is the time period T2, this is time period T3, T4, T5, T6, T7, T8 and T9. Okay, so these are the time periods of this clock pulse. Now at the first clock period, that is T1, what are the values of QA, QB and QC? 0. 0 0. So QA is 0, QB is also 0 and QC is also 0. Okay, so here Yes. I am writing the value of QB, QA, QB, QC. So QA is the MSB. Okay, QA is the MSB and QC is the LSB. So what is mean by MSB and LSB? Most significant bit and least Bit, significant least bit. significant bit. Very good, Bharat. So here we will have, so firstly I will write the value for A, then value of B and then value of C. Okay, next for the time period T2, what are the values of A, B and C? 0 0 1. It is 0, again it is 0 and here it is 1. So here we will have 0 0 1. Okay, 1. next what are the values in T3? Next 0 1 0. 0, 1 0, that is 1, 0 0. 1 0. Next Next 1, 0, 0 1 1. 0 1 1. Okay, next 1 0 0. 1, 1, we have 1 0 0. 0, 1. Next it is 1 1 0 1. 1. Next 1 1 0. Yes sir. Next 1 1 1. 1 1 1. Next 0 0 0. 0 0. Next 1 1 1. नहीं 1 0 1. 1, 0, 1. 0 1. Okay, so what you are observing here, what you are observing here, Sir, after T8 clock, it will restarted counting. yes, it is restarted. Okay, so what we can see here, that we have got the values of QA, QB and QC. So what are those values? We have got the values of QA, QB and QC. You can see here that this is the first value, that is 0 0 0. Then we have got the value 0 0 1. Then we have got the value 0 1 0. Then we have got the value 0 1 1. Then we have got the value 1 0 0. Then 1 0 1. Then 1 1 0. Then 1 1 1. Okay,
So if we want to observe here, this is nothing but the binary of 0. This is binary of 1. This is binary of 2. This is binary of 3. This is binary of 4. This is binary of 5. This is binary of 6. And this is binary of 7. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so हमने क्या किया यहाँ पर? हमारे पास ये 3 फ्लिप फ्लॉप का सेट था. उन तीनों फ्लिप फ्लॉप को हमने इस फैशन में कनेक्ट किया so that we have got this set of combination. Okay, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि 0 0 0 1 1 1 के बाद हमें फिर से यहाँ पे क्या मिल रहा है? 0 0 0. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा क्या कि we have created a sequence of 0 to 1, that is 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, and again 0. So here 0. how many states are there? 8. Total of 8 states we have. So this is known as mode 8 counter. Okay, and the counting will be from 0 to 7. Now 7. if we have n is equal to 5, then what is the mode? Please tell me. If n is equal to 5, then what is the mode? So 32. Is it 32? Okay, please rejoin again as the session has got over now. So all of you, please rejoin again. Please take the screenshot of the present students. Yes, sir. Okay, where is the CR?